Hello guys, Sushil here and welcome to Hack Shala. Today we are gonna see a new video on PHP database. Last time we have seen in PHP that form handlings. We made last video on form handlings. हमने last video form handling पे किया था. Then हम today we are gonna see database. मैं video sequentially नहीं बना रहा, just जो important topics है वो cover कर रहा हूँ. As the time passes, we are gonna cover the remaining topics as well as. So our today main goal is database PHP में we are gonna use phpMyAdmin. phpMyAdmin means MySQL database, and in this video we are not gonna see any installation part हम नहीं देखेंगे इस वीडियो में आज, because that's very easy. अगर आप Windows यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आप XAMPP यूज़ कर रहे हो, XAMPP सर्वर, एंड देन उस XAMPP सर्वर पे अगर आपने Apache सर्वर ऑन कर दिया और MySQL ऑन कर दिया सर्विस, तो वहाँ पे PHP एंड phpMyAdmin दोनों स्टार्ट हो जाता है. एंड देन सिंपल इन लिनक्स में अगर आप कर रहे हो तो लिनक्स में सिंपल apt get update phpMyAdmin कर दिया और डेटा और वो आंसर्स पूछते जाएगा, पासवर्ड्स एंड यूज़र नेम्स, एंड वो डेटा आप देते जाएंगे तो वहाँ पे भी इंस्टॉल हो जाएगा. सो दैट्स नॉट अ बिग डील. लेकिन अगर फिर भी वो वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा. we'll try to make that video. So in our today main goal is database in PHP. We are gonna create a simple sign up form and a login form. Okay, sign up form से हम डेटा इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में, देन लॉगिन फॉर्म में हम लोग डेटाबेस से फेच करके लॉगिन चेक करेंगे. ओके, वी आर गोना क्रिएट टू फॉर्म्स. डिज़ाइनिंग के लिए थोड़ा बहुत बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे, जस्ट नॉर्मल, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे उसमें. सो आई थिंक वी शुड गेट स्टार्टेड नाउ. ओके, एज ऑलवेज टुडे आई एम गोना यूज़, लास्ट वीडियो में हमने सबलाइम यूज़ किया था, एंड बट आज हम करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड. ओके, सो दिस इज माई फोल्डर, PHP proc के फोल्डर है मेरा. आई क्रिएट अ पेज login.php. ओके, सो जस्ट ये okay, login.php. First we have to design a simple login form. Login here I provided the title. We have to include a bootstrap. Okay, bootstrap for CDN. Okay, CDN means those are the links for bootstrap. You can get those from here. Just copy these links and paste in the head tag. Okay, they included the bootstrap मैंने इसलिए इंक्लूड किया बिकॉज डिज़ाइनिंग का हमारा काम ज़रा कम हो जाएगा, क्योंकि आवर मेन टॉपिक इज़ डेवलपिंग नॉट डिज़ाइनिंग. सो जस्ट div. Okay, div.jumbotron. Okay, jumbotron is a bootstrap class. You will see what happens. Login here. I just made a class and provided a class jumbotron and login here, and if you see, we'll run that localhost and PHP proc के folder, and उसमें login.php here, login here. Okay, I haven't given any style sheet like this, background color and the font size and nothing. I just provide this class jumbotron and it takes automatically. So that's because of bootstrap. This class is already defined in the bootstrap or somewhere in the here links. Okay, so that's the bootstrap, nothing more than that. So just we'll move forward in designing part. We'll cover it rapidly. So action, we are submitting to the same page. So login.php, हम ये फॉर्म इसी पेज पे सबमिट कर रहे हैं, इसलिए कोई और पेज नहीं. देन नाउ फॉर्म कंट्रोल्स. आई हैव टू टेक नेम. मैं नेम लूँगा यूज़र का. ये साइन अप फॉर्म है, सॉरी ये साइन अप फॉर्म है. साइन अप हियर, यहाँ पर भी साइन अप हियर. आई हैवंट डन प्रिपरेशन. मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया इस वीडियो के लिए, बस ऐसे करना. ओके, सो साइन अप अगर मैं 3 फील्ड ले रहा हूँ, उसका मैं नेम लूँगा, देन यूज़र नेम लूँगा, देन पासवर्ड लूँगा, बस सिंपल फॉर्म. ओके, देन
these are classes provided by Bootstrap, just don't worry about those. Okay, form group, then यहाँ पे I'm not gonna use labels. Input dot form control input type text. Instead of that I can use placeholders. Placeholder full name. Okay, this is required. This is required, and I can provide name to this as full name. I will say it fname. Okay, simple form. Same case, this is for username. This is username. Okay, one more for password. Text के यहाँ पे password form control and passwd and placeholder as password. Okay, just see this. Here our form comes. Okay, so that's why I'm using this. So now we have to insert a button. Button dot btn dot btn primary. Sign up. This is a button. Okay, so we have made our form. Just a little bit decorate it. Control V and keep everything is in the one more div dot कंटेनर के एक div बनाएंगे and उसमें सब कुछ डाल देंगे. ओके, तो ये कंटेनर का ज़रा विड्थ कम कर लेंगे हम लोग. ओके, like 40% would be sufficient. Okay, here goes our form. Sign up here. We can take this is also in center. Wait, Control S. We'll take this next to center tab. Okay, sign up here. This goes our form. अब ये हमारा फॉर्म हो गया. ये फुल नेम, यूज़र नेम, ये पासवर्ड. अगर मैं साइन अप कहूँ तो ये रिक्वायर फील्ड्स है. तो थोड़ा बहुत वैलिडेशन भी होगा यूजिंग HTML5. सो विल फोकस ऑन डेवलपमेंट. मैंने डिज़ाइन में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया यहाँ पे. जस्ट बेसिक है यहाँ पे. जस्ट वो अगर चाहिए होगा तो हम नेक्स्ट कोई किसी और वीडियो में बना सकते हैं. आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. और दिस वीडियो इज़ बेसिकली ऑन PHP, सो विल फोकस ऑन दैट. ओके, सो let's go and now write a PHP code. Okay, PHP, sorry, PHP, this is PHP. Okay, if I think I've forgotten something, मैं कुछ भूल गया हूँ. Can anyone remind? मेथड वैसे बाय डिफ़ॉल्ट गेट रहती उसकी, बट वी नीड पोस्ट. ओके, इफ आई फॉरगॉट वन मोर थिंग टू प्रोवाइड नेम टू दिस btn submit. Okay, so here if it's set, we have covered this in last video. अगर आपने लास्ट वीडियो देखी नहीं होगी तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आप चैनल पे ही. ओके, अगर सबमिट बटन पे क्लिक हुआ तो ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए अंदर का. जस्ट वी विल चेक
echo it's say it working. Okay, what it's saying? If it said yeah, I forgot याददाश्त बहुत कमज़ोर है मेरी, sorry. Yeah, post, and here I will submit this post because this form uses post method. Okay, and अगर post इस super global array में BTN submit करके कोई element create हुआ, अगर form submit हुआ तो ये वो run होगा. Okay, just refresh it one more times. Okay, and I will give something name like Sushil Shinde, username Saito, and password give it anything randomly. Okay, and sign up. It's working, it shows here it's working. Okay, means our form is working now. So what we have to do, access this all form data in our PHP code. Okay, अगर हमें डेटाबेस में इंसर्ट करना है तो पहले PHP कोड में लेना होगा. So first we'll declare some variables like fname for full name, and here post saying fname. Okay, uname for username, uname. What happened? I gave double equal to, and pwd for password. Okay, passwd. इस सुपर ग्लोबल एरे के मैंने जो भी एसोसिएटिव एरे है, ये जो एसोसिएटिव एरे है सुपर ग्लोबल एरे पोस्ट, इसके जो मैंने कीज़ लोकेशन दिए हैं एफ नेम, यू नेम एंड पासवर्ड, these actually are the names of these tags fname, uname and passwd. Okay, वो एरे में इन कीज़ पर वो एरे में ये लोकेशन तैयार होता है, क्रिएट होता है fname, uname and password, और जो डेटा मैं इसमें फिल करके सबमिट करता हूँ वो डेटा इस लोकेशन पे स्टोर होता है. So that's why to access that I pass these values here. पोस्ट एरे में fname प्लेस पे जो वैल्यू होगी वो fname वेरिएबल में जाएगी, uname की पे जो वैल्यू होगी वो uname पे जाएगी, एंड passwd की पे जो वैल्यू होगी वो pwd में जाएगी. वहाँ पे सेम btm सबमिट कह के भी एक की होगा, तो अगर वो ऐसी कोई वैल्यू होगी तो ये इससे ट्रू देगा और फिर हम इस कोड में जाएंगे. ओके, सो जस्ट वी विल प्रिंट आउट दिस डेटा टू जस्ट चेक. ओके, fname, then uname, and then pwd. Where is it? Okay, pwd. Let's check. As I said, Sushil Shinde, username would be Saito and password will be randomly sign up. Yeah, look, data is coming here. Okay, Sushil Shinde, Saito and dfd means we're accessing data in PHP. So now we have to do what? To insert this data in database. For that, first we have to create database. We have to create table, and then we can insert that now. So let's see that. Okay, so I have installed phpMyAdmin here. As I said, you can install that saying that apt get install phpMyAdmin. While installing, it will ask you some questions like username and password and some etc. Just provide that, and that will be installed on your system. Okay, if you're using Linux, and if you're using Windows, you can simply install XAMPP, and in XAMPP control panel you have to just start Apache server and MySQL. Then by starting that, just go to localhost and phpMyAdmin. Here you will see. Okay, here just provide your username Saito and just provide your password. Okay, this is your dashboard of phpMyAdmin. ये सब कुछ GUI है, it's always GUI, so that's not very hard to handle. Okay, so these are databases: information schema, MySQL, performance schema. These are the default databases in MySQL.
we have to create our own database. So I just click on new. Okay, just provide here database name as I provide Shala. Okay, and then here you have to create UTF-8 general CI. Can you see? Yes, UTF-8 general CI, and then just create. Okay, now you have to create a table. Now table I am creating saying users. Okay, and I have how much values? I have name, I have username, I have password, and one more extra will be ID. So I have 4 columns, so just keep that number same, 4 columns, and just go. Okay, so first column would be ID, will be int, and it would be auto increment. Let me show you. Here you can provide keys, primary, unique, index, etc., or just you can say AI means auto increment. If auto increment, then it's primary key. Okay, just say go, and here it's primary key. Okay, ID is the primary key for our database, our table. Then our next would be f name means full name. It's varchar, and I just provide size 100. Okay, next would be uname. It will be also varchar and just 100, and last would be passwd. It will be also varchar and 100. It's a structure, and I say save. Table created. Okay, here I say browse, no data found. Select all from user से query fire हुई यहाँ से, and data कुछ नहीं आया. Now we have to install data in this table. Okay, so this is the PHP code. So first we have to create a connection object. Connection का एक variable create करना है हमें. Okay, so to connect database to PHP code, we require basically three attributes of database. First thing, server. वो database किस server पे host हुआ है. In our case it's a local host. Okay, यहाँ पे हमने local host पे host किया है, इसलिए हमारा local host server होगा. Then second comes username for the database. Third, password for that user. Okay, and the fourth one is optional in that method, but you have to choose it, but you have to select it in any condition that database name. Okay, you can pass in that object, or you can select it later after creating that object by calling a separate method for that. Okay, so we will go first, as I said, server, and in our case it's local host. Sorry. Okay, server. Then username. Sorry, repeat हो गया. User. Okay. What was that? Saito. And next would be password. And just don't laugh on my password. Password here is my password. Okay, so your server is localhost, user is Saito, and password is password here. That's tricky. So, and last one is DB name. It was Shala as we created now. Okay, this is our credentials for database connection. Okay, now an object for database connection. So I say that object as a link. Okay, then PHP provides us a method MYSQL connect, a simple method to create a connection of PHP with phpMyAdmin database. Okay, it takes first argument as server, second one as user, third one as pass, and the last one as DB name. Okay, this is our object now, and just will check if the connection is made or not. So if not link, if अगर लिंक में boolean false हुआ, अगर कनेक्शन क्रिएट नहीं हुआ तो यहाँ पे इसमें boolean false जाता है.
Okay, so if it's not made, then we will say connection failed. Else if it's connected, we'll say echo connected. Okay, just we'll check it out. Okay, just give the random data here. 1 2 3 4 sign up, and it says connected. Okay, we have made a connection with database. Okay, if you have any queries, you can ask me in the comment section, no problem. Okay, now we have made a connection here. So now we have to code in this else part. Okay, we will code here. Now we have to insert this data, fname, username and password in our table in the backend. So basically we will need an SQL query. Okay, so just write that query. Okay, then insert into, what was the table name? Users. Okay, so insert into users, attributes fname, uname and passwd. Same, fname, uname and passwd. We are passing these values here because we are not inserting in every column of the table. We are skipping id. हम आईडी स्किप कर रहे हैं, इसलिए हम स्पेसिफिक कॉलम्स का नाम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं. अगर हम आईडी में भी डेटा फिल कर रहे होते तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी, बस वैल्यूज़ में सीरियल डेटा पास कर देते, वो 4 ही कॉलम में डेटा ले लेता. लेकिन हम लोग आईडी को स्किप कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन करते हैं कि हम कौन कौन सी कॉलम्स में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं. ओके, सो वैल्यूज़, हियर वी गो, एंड आवर वैल्यूज़ आर फर्स्ट fname in single quotes, comma, then uname, single quote complete, and one more pwd. Okay, this is our SQL query. SQL insert into users, fname, uname and password, these are the column names. Then values, here we pass variables or data. Okay, now we have to execute it. Okay, that's very easy. PHP database in PHP is very easy, not like any rocket science. Just focus on the concepts. Okay, now I'm just saying result करके एक variable कह रहा हूँ, res, and PHP provides a method to execute a query saying MYSQL query. Okay, which takes input, first would be our link, means object to database, and second would be our SQL query. Okay, this. Now after executing this query, there are two types of queries. If you are Java developer, means if you are from Java background, so you know in Java we use two different methods to execute Java queries, like execute query and execute update. Okay, execute query use for what? Select query, and execute update we use for what? Insert, delete and update queries. Because insert, delete and update queries return an integer value, that how many rows are affected in database. अगर हम insert, delete या फिर update इन क्वेरीज को फायर करते हैं तो ये हमें रिटर्न करती है कि इंटीजर वैल्यू की डेटाबेस में कितने रोज अपडेट हुए. ओके, कितने रोज अफेक्ट हुए. एंड वी सी सिलेक्ट क्वेरी, इट रिटर्न्स द रोज, इट रिटर्न्स अ कर्सर, ये नंबर ऑफ रोज रिटर्न करता है हमें. ओके, सो इस क्वेरी के बाद रिजल्ट में इंटीजर वैल्यू आएगी. ओके, इनिशियली मैं res को 0 कर देता हूँ, एंड इफ़ इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद एक भी रो अपडेट हुई होगी तो res की वैल्यू बदल जाएगी. ओके, सो वी विल चेक दैट इफ res is greater than 0. Here I will just
echo and pop-up message. Data inserted. ओके और इफ ऐसा नहीं हुआ so I will a pop-up message saying insertion failed. Okay, insertion failed, just say it, and we will check it now. Where is it? Here. Okay, just give a name Sushil Shinde, username Saito, and password I'm saying 1234. Okay, and it's saying data inserted. Okay, data inserted. Now let's check our database. Here, just refresh it, and here our data goes 1 Sushil Shinde, Saito, and 1234. Okay, ID is an auto increment ID, so first row it will take 1. I will insert more records here, like we'll say Vishal Wagmare. I missed to mention it today. Vishal sir is not here, sir, miss you. Okay, then he's Vilu, and password 4321 I will insert, and sign up, data inserted, don't save, and okay, and just refresh it one more time, and here's a second Vishal Wagmare will do 4321. Our connection database is made. Okay, so in this video I think we will stop here. In next video we will see login form. My plan was to show that in the same video, but as I said I haven't मैंने प्लान नहीं किया था इस वीडियो के लिए कुछ भी, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गया, तो इस वीडियो में हम यहाँ पे रुक जाएंगे. फिर मैं नेक्स्ट वीडियो करूँगा लॉगिन के लिए, उसमें हम सिलेक्ट क्वेरी करेंगे, एंड उसमें हम पासवर्ड अपडेट का भी देंगे कि हम पासवर्ड अपडेट करना है तो उस अपडेट क्वेरी का भी देखेंगे उसमें. ओके, ये जो सोर्स कोड की फाइल है ये मैं वीडियो अपलोड करते हुए वहाँ पे लिंक कर दूँगा, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज so you can mention it in comments. Okay, no problem, then bye bye, see you in the next videos. Thank you.